Hello everyone, I welcome you to Kalam IS and I'm here to present before you the very important repeatedly asked topics in the examination. This particular initiative that we call it as this one, right? This VIRAT. And this initiative is simply, okay, that simply help you to understand the relevance of most important topics in the examination. See, the one thing is what the UPSC repeat itself. Okay, repeat itself. Now, repeat itself over here, it doesn't mean that question that would rather get as it is repeated. No, the question is absolutely different, possibly unique itself, but you know, UPSC repeat itself around a common themes. Okay, common themes, and believe me, being an aspirant, okay, being an aspirant for that examination जहाँ पे repetition हो रहा है, and if you fail to understand that repetition, okay, of the topic, of the themes, okay, and kind of nature as well, I believe in that case you are, doing a kind of not very smart work. You are merely doing a hard work. So do ensure this fact that okay, we should have a right understanding about the repetition of themes over in the examination. That would give us a an edge or advantage over in the examination. तो ये जो initiative है हमारा, ये initiative इसी पर पर्सपेक्टिव से है दैट कि आपको ये जो रिपीटिशंस हो रहा है उस रिपीटिशंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड कि एग्जाम में उसके बेनिफिट्स भी आपको हो जाएंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम नाउ आई शैल स्टार्ट this discussion. See, this is what the very important topics of geography I have already listed over here, right? I am going to have a discussion over here on the geography and environment as in. ठीक है, तो ये जो टॉपिक की ऑलरेडी लिस्ट है ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है से from various branches or domains of the geography itself. ठीक है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे मैं उसको कनेक्ट भी कर दूंगा how these topics are what being repeated over in the examination and now in the 2025 attempt which topic or themes we are supposed to prepare for. ठीक है, so चलो. Equally, you can have a screenshot of this, guys, right? You can have a screenshot. Equally, you can have screenshot of this as well. See, this is what a proper division of subject wise, branch wise topics, okay, or questions over in the 2024 to 2017 examination. So 8 years का ये क्लियर डिवीजन होगा ईच टॉपिक वाइज. क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कल्चर, ट्राइब, एग्रीकल्चर एंड ऑल दिस. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर चार्ट आई बिलीव वुड रादर हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन क्योंकि इसी से कनेक्ट में मैंने अभी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन किया है. नाउ so starting with the first one, that is the climatology. See, I have arranged this particular branches like in order of their relevance or significance in the examination, and I believe climatology is that particular branch जिसकी repetition बहुत ज्यादा होगी. अगर यहाँ पर भी देखोगे you will find repetition 2026 में 6 क्वेश्चन है, 3 में 23 में 2 question, 3 question, 2 question, 1 question. You will find consistently questions are there over on the climatology, and for 2024 latest you will find क्वेश्चंस का नंबर तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया. सो यू हैव टू फोकस मच ऑन दिस क्लाइमेटोलॉजी एज ए ब्रांच. अब इसी में हम सब डिविजन्स भी देख लेंगे. सी, ओवर इन द क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर इज रादर अगेन वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी. ओके, एटमॉस्फेयर देखो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ये सारे पीवाईक्यूज के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखेंगे. ओके, सो यू कैन हैव ए वैलिडेशन एज वेल कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली नॉट विदाउट एनी प्रूफ और वैलिडेशन. सो यू विल फाइंड विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विद व्हिच वन ऑफ द following statement is correct. 2023, consider the following statement about the thickness of the troposphere at the equator is much greater than this one. ठीक है, and consider the following: the atmosphere is heated mainly by incoming solar radiations and this. See, in the last 3 years you will find atmosphere पे consistent question है.
So in such a case, now for 2025 attempt equally, we will have this atmosphere as a very key topic of our preparation, जिसपे हमको atmospheric layer, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, ionosphere as well we have to prepare for. Then you will find atmospheric composition, atmospheric changes over in the composition, the properties of atmosphere, and say somehow current connected with this, we have to prepare it accordingly. Okay, so atmosphere, very much important topic. Next, you'll find from the same climatology itself, always, believe me guys, always you will find one question on types of this climatic classification or climatic classification that you must be aware about. This Köppen's climatic classification, yeah, ट्रेवार था जीएस के लिए, तो हमारे लिए particularly this two are rather important, more or less having overlapping as well. For sure I am telling you, one question will be asked in the examination on this types of climate. You have to prepare it well. A, B, C, D, E, F, right? ये जो types of climate है वो आपको देखने हैं, सही से समझने हैं. And believe me, each of this type of climate has some clues to connect with. So if you able to understand, right? In my class I usually ensure एक चार्ट बना लेते हैं हम, हर किसी type of climate के clues वहां पे लिखते हैं. So that exam में जब आएगा 100% इस clue के in and around ही question revolve होगा. In such a case, we should have a rightful understanding. देखो जैसे you will find tropical rainforest या rainforest climate वाला question है, या consider the following description and which type of climate it is, right? 2023 वाला question है, and this is just few examples over here. ठीक है, you will find यहाँ पर भी type of climate is rather asking us for. ठीक है, तो कंपल्सरी क्वेश्चंस होंगे, मे बी किसी बुक का पैराग्राफ लिया जाएगा, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट और सम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, देन यू हैव टू अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, सो टाइप ऑफ क्लाइमेट वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी वर्क क्वेश्चन यू विल फाइंड. देन साइक्लोन है ना, that is a mass that keeps a low pressure at the center and having a high pressure at the surrounding, and the inward movement of the air spiral that it connects with. So cyclone you will find is very much important topic for our preparation, and over here you will find cyclone continuously current affairs में होगा. PYQs में अगर देखोगे तो इसके references आपको 100% मिल जाएंगे in prelims and as well as in the mains. ठीक है, ऐसे नहीं कि ये topic सिर्फ prelims के perspective से, it is equally from the perspective of mains. And now in the examination, then you will find like this particular topic of cyclone has very much appearance in the newspaper. ठीक है, very much like India, as you know कि India का east और west both coasts are rather prone to the continuous cyclonic activities. ठीक है, cyclonic activities, and in such a case, in such a scenario, the thing is we have to understand कि साइक्लोन की ये जो टॉपिक्स है या साइक्लोन का ये जो पर्टिकुलर केस है, ये रिपीटिशन होना ही होना है ना. लाइक 2015 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द कोरियालिस फोर्स ओवर इन द लास्ट 2024 एग्जामिनेशन, देन यू विल फाइंड व्हाई साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट ओवर इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ पैसिफिक सी. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन एंड अराउंड द cyclones, and in such a case, in such a scenario, अब now we have to focus equally on this cyclone those are in the current affairs. So which cyclones are in the current affairs? You will find cyclone फेंगल. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो फिर नेम ऑफ साइक्लोन एंड द कोस्ट और द स्टेट वेयर इट अपीयर्स. ठीक है, या साइक्लोन एंड से द करस्पॉन्डिंग वेरियस नेम्स ऑफ द साइक्लोन, जिस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है, साइक्लोन्स एंड वेरियस नेम्स ओवर इन द डिफरेंट रीजन. देन यू विल फाइंड साइक्लोन आसना, that is very unique cyclone as in that appear over on the coast of Gujarat, and it was equally in the current affairs due to many of the reason. It was since 1964 that one that form in the Arabian Sea and to miss the Gujarat coastal region. So that equally, though it has a landfall in a sense that near about that region, however, so that is one of the very unique cyclone that we have in our what current affairs. तो हमको क्या करना है, फिर साइक्लोन भी स्टडी करना है, theoretical aspect, and equally this current affairs related with the cyclones as well. ठीक है, so I hope you are getting this topic of
cyclone as well. Important hai from the examination perspective. Then next, as you know, cyclone that connects well with this. However, this is what the very much theoretical topic as in and winds. ठीक है, winds, as you must be knowing, winds are like the horizontal movement of air in a well defined direction. It is what a wind that is given in the NCERT this definition. A wind basically you will find wind का topic ना बहुत important होता है, इस पे in and around you will find question. जैसे 2024 prelims का ये question पूछा गया है, ठीक है, this one right, ये connect यहाँ पे होगा, and you will find ये question है 2016-17 prelims का, ठीक है. So you will find question over on trade winds, westerlies, polar easterlies, jet stream, geostrophic wind or western disturbances. Okay, western disturbances जैसे जो अभी current affairs में है ही वैसे भी, or you will find polar vortex. Polar vortex, right? See, what you have to review and recall these concepts again and again, because see around winds you will find questions for sure. Okay, अभी winds है तो यहाँ पे थोड़ा इसी से connect में you will find, जैसे atmosphere से भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, this greenhouse gas effect that connect over in the environment as well, this particular one, global warming and greenhouse gas effect. So various technologies, those are in connection with, we can absolutely connect over with this particular topic, that is wind. ठीक है, important है again from the perspective of examination. Next, so climatology, we have discussed few और important repetitive theme. एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कनेक्ट भी कर लो हीट बजटिंग, है ना, हीट बजटिंग से कनेक्ट कर सकते हो, एंड यही पे ग्लोबल वार्मिंग भी आ सकता है, या एनवायरमेंट के पॉइंट्स में भी हम इसको देखेंगे वैसे. सो देयर यू विल फाइंड फिर एटमॉस्फेयर, दैट्स लेयर कंपोजिशन इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट है. देन इसके बाद देखा हमने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, कंपल्सरी वन क्वेश्चन. देन यू विल फाइंड साइक्लोन एंड देन यू विल फाइंड विंड्स. ठीक है, तो दिस आर रादर much repetitive questions over in the examination from this themes itself. Next जो topic हमारा होगा, next जो branch actually, that branch is oceanography. Okay, as you know, see oceanography as a branch rather very much important when it comes to cost to benefit analysis. When it comes to cost to benefit analysis, you will realize, you will find that oceanography is rather very much, written oriented topic. See, in fact, there are few topics over in the oceanography. जैसे you will find oceans है, world distribution of oceans है, then in the oceanography, bottom topography of the oceanic surface, continental shelf, continental rise and sea floor, and this one. Then you will find again in the oceanography, oceanic circulation है, tides है, waves है, currents है. Then you will find oceanic resources and maritime boundaries. ठीक है, coral reefs भी इसमें connect हो सकता है, environment से भी connect हो सकता है. So these are what the most common topics you will find over in the oceanography. But believe me guys, from oceanography you will find 2 or 3 questions. Sometimes one question भी होगा, but 2 or 3 question after having this much of study of this particular oceanography. And these questions are comparatively of easy nature, right? Comparatively easy nature, बहुत ज़्यादा difficulty level के questions नहीं होंगे, but on that sense, it is having highest cost to benefit analysis. This is what my observation is for oceanography, है ना? So we have to make it sure, we have to ensure this fact that oceanography is rightly dealt by us. ठीक है, ये rightly deal करना है हमको ओशनोग्राफी के हर किसी पॉइंट को. अब उसमें भी राइट, उसी में भी अगर इफ we can divide based on the themes and repetitive themes over in the examination जो करंट में भी चल रहे हैं, and even without any reason they appear over in the examination, तब भी you will find this oceanic circulation is rather of very much importance. ठीक है, very much important. I have considered ओशियानिक लोकेशन, या रेड सी पे क्वेश्चन होगा, अराल सी पे होगा, मेडिटेरेनियन, मैंने उसको वर्ल्ड मैपिंग के टर्म में रखा है रादर देन द टॉपिक ऑफ ओशनोग्राफी. ओके, सो दिस वन ओशियानिक सर्कुलेशन यू विल फाइंड कंपल्सरी क्वेश्चन है, काउंटर करंट पे, टाइड्स पे क्वेश्चन है, एंड यू विल फाइंड द
isothermal maps जहां पे again oceanic current is rather well connects with. So you will find, see, questions are consistently being asked on this particular oceanic circulation topic. We have to prepare in right detail tides, oceanic currents, waves, and some current phenomena. जैसे you will find meridional, Atlantic meridional circulation, AMOR, इसका collapse that is in the current affairs. Thermohaline circulation, thermohaline circulation, you will find that is rather over in the current affairs, and we need to understand this concept rather in pretty much detail. Okay? So from oceanic circulation we need to connect this particular point. Then again in the current affairs you will find, yes, the second topic that is in the current affairs, the high seas treaty, or the treaty biodiversity beyond the territorial jurisdiction treaty. This treaty was, see, finally accepted in 2023. It was open for the ratification in 2023 itself, India being a party to this, and current affairs में ये treaty जो है, you will find it is rather in the news. So now from that perspective you will find this particular treaty is of very much importance to us. From this perspective then you will find this treaty is of very much importance to us, right? Because again high seas region क्या होता है, high seas treaties क्या है, that we need to understand then well. ठीक है? So over here now देखो अब हाई सीज ट्रीटीज पे है तो हाई सीज ट्रीटी पर भी क्वेश्चन आएगा, एंड द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन आवर डॉक्यूमेंट स्निपेट 365, राइट? यू कैन गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट. आई बिलीव द टॉपिक, दैट डॉक्यूमेंट इज रियली वेल एक्सप्लेन एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, सो दैट कि आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड सब भी मिलेगा और इक्वली राइट डेप्थ ऑफ एक्सप्लेनेशन इक्वली इज देयर. सो यू कैन गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट आल्सो. नाउ see guys, जब when high seas treaty, the factual information you need to cover, and then you need to recall, जैसे इस पर maritime boundaries पे there was one question that was asked in 2023 itself. ठीक है? So 2023 there was already a question that was asked in the examination, and what now we have to, because high seas region is in the current affairs, we have to recall this topic, okay, that maritime boundary again over with respect to this. Just say you'll find internal waters is there, what is this, baseline, then territorial waters, then continental shelf region, then you will find the high seas region, exclusive economic zone, okay, yeah, domestic airlines, domestic air zone and international air zone. So 7 to 8 different boundaries have been defined over in the UN clause, and then you need to connect or revise and recall this topic as well. Question already पूछ रखा है, और because it is in the current affairs, now UPSC has every right reserved so that it can ask the questions again. So this is about the oceanography as a point. Now guys, see, after oceanography, now it is turn to discuss the नेक्स्ट सरप्राइज ब्रांच, आई बिलीव. ठीक है, बायोजियोग्राफी पे वैसे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो जैसे सॉइल रिलेटेड, सॉइल पे कभी क्वेश्चंस आ जाएगा, yes, but the very surprise branch over here is now geomorphology. Okay, this geomorphology, that is the geo, that means the earth, and the morphology, that simply means the features, the feature related study of the earth's surface. Now see what this geomorphology has somehow, at least for the case of preliminary examination, somehow being neglected branch, right? अगर इसका हम PYQs अगर हम देखें, since the new pattern that was put into place in 2013, 14 and afterwards, you will find the geomorphology has comparatively less focus that was given, being theoretical in nature, being a comparatively vast in nature as well, and there are number of topics and subtopics over into this topic. So at least like say अगर हम year wise अगर इसको trace करें, तो since
2017 I haven't find any significant what weightage that is given by the UPSC. In fact 17-18 to 2022 you will find यहाँ पर number of questions were comparatively zero. राइट हाँ, कोई क्वेश्चन अगर कनेक्ट हो सकता है तो माउंटेन से कनेक्ट हो जाएगा, बट उसको भी वर्ल्ड मैपिंग में डाल सकते हैं हम, या कोई क्वेश्चन अगर कनेक्ट होगा that is maybe with the astronomical then geography, right? तो एक कोई कनेक्ट हो सकता है, but rarely you will find that connects with the geomorphology core in itself. ठीक है, so that's why इसका जो overall weightage था over in the examination seems somehow poor, zero almost. So I used to advise over students as well that don't go through geomorphology, and if you don't have enough time to recall or revise the content, in such a case skip the geomorphology. But now in the last 2 years examination अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो दैट इज व्हाट इवन बेसिकली हम रिपीटेटिव थीम्स की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, इज व्हाट आई बिलीव मस्ट बी एडेड. सो इन 2023 देयर वाज वन क्वेश्चन दैट वाज कनेक्ट विद द seismograph, ठीक है, P waves and S waves and related question है, and in 2024 2 questions okay were asked from the geomorphology branch. Okay, 24. So I can I can see 100% or doubling of the weightage of this geomorphology in the last 1-2 years, and that simply reflect कि possibly in 2025 if questions 3-4 अगर इस पर आ जाए या possibly और ज्यादा भी आ जाए, I won't be amazed. The reason is simple that UPSC has shown a trend. ठीक है, अगर उस ट्रेंड को हम ट्रेस कर पाए, अगर राइटफुली अंडरस्टैंड कर पाए, वी कैन हैव ए better what preparation for the upcoming examination. So what is my suggestion for you guys? Now go through geomorphology with some with equal force as well. ठीक है, I know being factual topic है, और अब इस पे जो क्वेश्चंस अगर आएंगे भी ना तो बहुत ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे. सी द रीजन इज सिंपल, प्रीटी मच सिंपल, क्योंकि अभी तक इस पे बहुत ज्यादा डेप्थफुल क्वेश्चन थे नहीं, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज्यादा डेप्थ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग और आइडिया अबाउट ऑल दोस टॉपिक्स. सो द टॉपिक लाइक इन दोस इंक्लूड्स यू विल फाइंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, रॉक्स है, रॉक टाइप्स है, रॉक फॉर्मेशन है, रॉक साइकिल है, देन यू विल फाइंड द प्रोसेस ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ना, वेरियस प्रोसेसेस, वोल्केनो, अर्थक्वेक है, देन यू विल फाइंड द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है, वेदरिंग है, erosion and weathering related landforms as well, erosional landforms and depositional landforms, and somehow the phenomena is connected with this. So you have to have at least some basic information or idea about this particular topic. I say, ठीक है, so geomorphology is a kind of surprise अगर हो सकता है तो over in the examination. Now देन नेक्स्ट वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट इससे कनेक्ट करेगा, दैट इज वर्ल्ड मैपिंग. ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग यू विल फाइंड कि यहां पर भी यूपीएससी हैज वेरी फोकस्ड अपॉन राइट दिस ऑन दिस एरिया. यू विल फाइंड वर्ल्ड मैपिंग पे कंसिस्टेंटली क्वेश्चन है 2017 से 2 1 1 1 3 3 2 2 3 राइट. यू विल फाइंड कि इस पर ना कंपल्सरी क्वेश्चंस आएंगे ओवर इन द एग्जामिनेशन, राइट. सो ऑफ द ऑर्डर 2 3 4 क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन द एग्जामिनेशन. जैसे यूक्रेन के बाउंड्रीज पे क्वेश्चन पूछा था, यूक्रेन वाज इन द करंट अफेयर. अफगानिस्तान के बाउंड्रीज पे करंट पूछा था, व्हेन अफगानिस्तान वाज इन द करंट अफेयर. यू विल फाइंड देन समहाउ कनेक्ट विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द डिवीजन 10 डिग्री लाइन या सेपरेट कर रहा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार. यू विल find कि in and around this particular topic या mapping questions are compulsorily being asked. ठीक है, तो the thing is you have to right, जैसे देखो यहाँ पे मैंने सारे questions रखे भी है. So you have to prepare this mapping areas well, because mapping only then will reflect the clear अंडरस्टैंडिंग एंड ज्योग्राफिकल कनेक्ट वेल एज वेल. तो ये वाले पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. नाउ अब ये रिवर्स में सी, सो ओवर इन द मैपिंग व्हाट यू आर सपोज टू रिवर्स, ओवर इन द मैपिंग व्हाट यू आर सपोज टू माउंटेन्स, पोजीशन या लोकेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है,
सो कंट्रीज के लोकेशन या कंट्री के बाउंड्री पे जो करंट अफेयर्स में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देन यू विल फाइंड नाउ द इजराइल इज इन द करंट अफेयर्स, पैलेस्टीन वाला रीजन है, सीरिया इज इन द करंट अफेयर्स, अगेन डेड सी दैट इज इन द करंट अफेयर्स, है ना. देन यू विल फाइंड बाकू अजरबैजान, देयर वाज COP29 दैट वाज हेल्ड, सो यू हैव टू लुक फॉर this particular area as well. Yeah, you will find Gulf of Mexico now, what renamed by America as Gulf of America, right? Greenland is in the current affair. So you will find is topics के in and around, इस location के in and around question की probabilities है. You have to keep a rightful watch over on this topic itself. ठीक है, तो वहां से question हो सकता है. Now from the world mapping, because we are dealing with the repetitive topics or themes over in the examination over in this video, so see guys, अब देखो यहां पर अब जो मेरा एनालिसिस बोल रहा है that simply two areas are excessively focused by the examiner, ठीक है, and these two areas, the one is mother continent, that is Africa. You will find Africa पे world mapping पे या वो in and around world resources of the Africa, yeah, which of the following are the like the largest producer of the coffee, which of the following produces 75% of the cobalt production over in the world, and in and around you will find कि topics बहुत repetitive होंगे from Africa. दिस अफ्रीकन क्वेश्चन, राइट, देखो यहाँ पे ये सारा दे रखा है, कॉन्गो बेसिन में कौन सी कंट्रीज होगी या वर्ल्ड्स कोबाल्ट प्रोड्यूसर है, बहुत सारे क्वेश्चंस है वैसे, ठीक है. सो आई हैव एडेड ओवर दिस टू ओनली. यू विल फाइंड फॉर श्योर अफ्रीका पे क्वेश्चन asked over in the examination 100%, right? Maybe alternate year होगा, 2 years के बाद होगा, but you will find कि examination में question अफ्रीका पे पूछा जाएगा. So Africa you need to deal in a pretty much what in depth, right? Congo basin, Congo river है या Zambezi river है, mountainous region है या Sahara desertic part है ना, तो anything that is in the current affairs as well, you have to keep a watch on this as well. Then the second area वर्ल्ड मैप जो फोकस करता है दैट इज वेस्ट एशियन रीजन, ठीक है. वेस्ट एशियन रीजन इज इक्वली वेरी मच फोकस्ड बाय द यूपीएससी. आई डोंट नो द रीजन. यू विल फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, या फिर गोलन हाइट रिसेंटली सीन द न्यूज. और यू विल फाइंड कि बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो रेड सी पे है ना, जैसे रेड सी पे तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, सॉरी, दोज आर connected with the African region itself, ठीक है, West Asian region as well and African as well. So we have to keep a rightful watch on these two areas as well, ठीक है. वैसे अब न्यू एरिया जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वो अमेरिकन वाला गल्फ ऑफ मैक्सिको और इस वाला रीजन में, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी से, बट यस दिस टू एंड देन other current affairs as well, you have to connect with this, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया पे जनरली क्वेश्चन नहीं है. यूरोप इज comparatively less focused than this two, but yes, यूरोप is also well sometimes asked over in the examination. तो इस थीम के अराउंड आपको प्रिपरेशन करना है. आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस थीम. नाउ अब that deals with the world geography वाला पार्ट है ना, climatology, oceanography, geomorphology, world mapping. Now there is very high weightage that is given to Indian geography. 7 to 8 questions you will find are asked over in the examination from the Indian geography itself. So this is very much important topic for us. Now अब over in the Indian geography what type of themes are being repeated, ठीक है. Themes, repetitive themes है, that is what I can for sure and 100% you can tell you that rivers, lakes या water bodies, इसके in and around questions यूपीएससी में हर बार पूछा जाएगा, है ना, हर बार पूछा जाएगा. So you have to prepare these topics well. Tributary of Godavari, tributary of Indus, tributary of Tista and its tributary, its location. You will find the rivers, okay, that those are merging to the Ganga basin itself. Then then you will find Indus river का भी ऐसा ही same question है. Every year I can say cover lake per question है ना, that way. So you will find every year rather 1 or 2 question. I am telling you 1 or 2 question is what being repeated over on this topic, river, lakes, water bodies and connected parts, ठीक है. So we have to prepare this thing well as well, ठीक है. तो मेजर जो रिवर्स है उसको प्रिपेयर करना है. अपार्ट फ्रॉम द मेजर रिवर्स देन हमको करंट अफेयर्स में जो रिवर है वो फोकस करना है. जैसे यू विल फाइंड महादई
गोवा कर्नाटका डिस्प्यूट है, यमुना दिल्ली इलेक्शन के रीजन से वैसे भी करंट अफेयर्स है, केन बेटवा इंटरलिंकिंग कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है, चंबल यू विल फाइंड चंबल दिस वन modified Parvati Kalisin Chambal connectivity project is there. Tista, that is India Bangladesh Tista water treaty as well, that was again has expired. So is for जैसे भी current affairs में Bangladesh is anyway unsettled somehow. Then Kalsa Bhandori project that is over in the Goa and Karnataka connect with the Mahadayi river, right? So you will find कि ये कुछ points है, कुछ topics है जो current affairs में भी है या reverse है जो current affairs में है. So what you have to you will find छत्तीसगढ़ में महानदी हसदेव रिवर that was in the news as well. ठीक है, हसदेव. So this kind of rivers or water bodies, those are in the current affair. Lakes भी लेने हैं इसमें, Ramsar sites और lakes, you can absolutely connect well with that. ठीक है, much repetitive theme है this river and lakes. Okay, so you have to prepare well with this. Then next repetitive theme from the Indian geography is rather mountain ranges, okay, or mountains. So you will find देखो जैसे place of pilgrimage and location. So कहाँ पर है, right? So over here. Then Amarkantak hills are the confluence of this. Then the Biligiri Rangan, Sheshachalam hills है, or you will find peaks है and mountains है. What just like river, you have to explore possibility. River and reservoir, river and dam, river and state boundary that it defines, or river and water dispute tribunals, right? Water dispute states as well. Yeah, river or कुछ cities located on the banks of a river, right? In the same way, we have to explore this possibility is connected with the mountains as well. ठीक है, mountains passes, mountain cities, mountain connectivity with the different countries है ना, या boundary that defines with. So you have to explore this thing as well. So which mountains are rather important to us? Himalayan mountain ranges. ठीक है, इसके जो further divisions आएंगे, Aravallis है, current affairs में वैसे भी Aravallis होगा, Vindhyas है, Satpuras है, Western Ghats है, Eastern Ghats है. So we have to है ना, and Purvanchal as well. ठीक है, so we have to go through this theoretical topic in right detail as well. अभी देखो इसका not necessary current context होगा इसका, ठीक है, current context नहीं होगा, but ये है हमारी विराट वाली theme, repetitive theme. ठीक है, so you have to prepare this river, mountain, hills, right? This topic well into depth. Theoretically होगा, factual भी होगा into depth. ठीक है, then वेजिटेशन अगेन अ रिपीटेटिव थीम. यू विल फाइंड वेजिटेशन पे देखो क्वेश्चन कंपलसरी होंगे है ना, अल्टरनेट ईयर पे वेजिटेशन पे 1 और 2 इयर्स पे यू विल फाइंड क्वेश्चन. रिपीटेटिव थीम के टर्म में अगेन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला ये वाला क्वेश्चन है, और सी यू कैन फाइंड दिस वे. सो questions are pretty much compulsory over here. So theoretically you have to prepare for, right, कि जैसे evergreen tree, moist evergreens, then dry evergreen, then deciduous, dry deciduous, moist deciduous, thorny, then alpine forest types of forest. Their species पर भी question पूछे over which of the following are not a deciduous tree and that particular way. ठीक है, so you have to prepare this topic in advance, in depth as well. And current affairs के साथ जो connected है, that IFSR report, India State of Forest report has been published by the Ministry of Environment, right, in 2023. So you will find इसके in and around भी question आ सकता है. Okay, so that is equally a repetitive theme from the Indian geography section. Apart from this, you will find mapping से तो Indian geography and mapping से तो question आएगा ही आएगा. So you have to prepare this mapping वाला section है ना, equally into that required detail. ठीक है, so just like world mapping, Indian mapping is equally important. तो अंडमान निकोबार I would say rather is pretty much repetitive theme है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, इस पर क्वेश्चंस ओवर इन द एग्जामिनेशन पूछा ही जाएगा अल्टरनेट ईयर्स पे, तो वो हमको देखना है. नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल्स या ट्राइबल रीजन्स पे करंट अफेयर्स में है, सो देयर यू विल फाइंड वी हैव टू है ना, देन मीजोस है या कुकीज है ना, मैतीज है, सो देयर ट्राइब, देयर नेचर, मे बी देयर अबाउट देयर कल्चर और एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, वी इक्वली हैव टू प्रिपेयर दिस केस. तो ये सारे टॉपिक्स है जो रिपीटेटिव थीम्स है ओवर इन दी examination. I hope guys you are getting this with respect to the world geography. Now after world geography, now it times for
to discuss those repetitive themes, the VIRAT themes over in the environment and ecology वाला section also. ठीक है, this is equally the same. You will find chart बनाया मैंने say based on the analysis of 17 to 24 examination, and there you will find topic wise यहाँ पे कुछ number of questions दे रखे हैं, कुछ repetitive questions आपको दिखेंगे themes के in and around, and you can absolutely prepare them accordingly. I have equal validation for this, जो भी हम इसमें discuss करेंगे. You can have a screenshot. Then see the question for sure from the environmental domain. You can connect with the geography या environment कैसे भी रख लो, right? You can find with, but green agricultural means and practices for sure question will be asked, right? Just like you will find question around Sri rice cultivation method है, ठीक है, या क्वेश्चन यू विल फाइंड परमाकल्चर फार्मिंग दैट वाज आस्क्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइक द लीस्ट वाटर एफिशिएंट टॉप सम वाटर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट है, यू विल फाइंड जिस पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. ठीक है, सो नाउ इन द करंट अफेयर्स लाइक द वेरियस कार्बन फ्रेंडली practices are there, जैसे कार्बन फार्मिंग. ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लोर दिस वन, यू कैन एक्सप्लोर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू कैन एक्सप्लोर द नेचुरल फार्मिंग, है ना, नेचुरल फार्मिंग, काउ फार्मिंग. So different types of farming practices and equally some methods to reduce the farming or agricultural impacts over on the environment. You can absolutely explore those themes also. But believe me guys, इस topic के around questions will be there over in the examination. ठीक है, तो इस टॉपिक के इन एंड अराउंड क्वेश्चन होगा, सो यू हैव टू प्रिपेयर. देन द मोस्ट रिपीटेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउएवर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस थीम, दैट इज दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन समिट्स एंड इनिशिएटिव्स. See guys, this particular theme is very much important. ठीक है, इस पे बहुत सारे probabilities बनेंगे questions के. हर every year you will find 2 or 3 questions, those will be asked over on this particular theme. So maybe sometimes summit पे question पूछ लेगा, किसी convention पे question पूछ लेगा, या कभी किसी initiative पे question पूछ लेगा. अब now up to 2017-18 the trend was like UPSC used to ask question on some well known theme conventions or summits. ठीक है, जो वेल नोन थीम्स होगी कन्वेंशंस की, या वेल नोन समिट्स होगी, या इनिशिएटिव होगा. What happened however 18, 19 and afterwards, see what UPSC has started कि अब now the trend has gone changed, and now question from rarely known summits, rarely known conventions or initiatives as well you will find, जैसे World Toilet Organization या World Tree Organization. ठीक है, या you will find और भी जो unknown है invasive species group. Okay, that this kind of questions they are not well into the current affairs. ठीक है, though you अगर हम efforts लेंगे तो क्या can connect with it absolutely, but this topic I believe is having a very broad horizon. ठीक है, बहुत broad area and horizon it is rather going to cover for you. So the thing is this topic is again repetitive, no doubt you will find 2, 3, 4 questions from this particular case. हाँ, but अब फिर accordingly हमको इसमें देखना भी है कि हम कौन से एरियाज प्रिपेयर कर सकते हैं. हियर आई हैव added many themes of probable topics over those for important from 2025 examination. जैसे you'll find the global biodiversity framework fund has been created, so you have to look for. Then international big cat alliance after completion, say on the occasion of completion of 50 years of Project Tiger, global geopark network of UNESCO, then United Nations forum on the forest, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स ओवर इन द इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन के साथ है, तो बेसिकली भी यूरोपियन यूनियन चीफ की यू विल फाइंड विजिट देयर वाज इन इंडिया. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, दैट इज अगेन यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर इन इंडियन इनिशिएटिव लेड बाय द इंडिया इटसेल्फ. देन इंडियाज बायो बिटुमिन इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू हैव ए एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. देन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है. Then Antarctic Treaty that was held over in the Kerala itself, so India being a party to this convention, so वहां पर भी important है. Climate Finance Action Group of COP29 Baku, Azerbaijan, so Azerbaijan का initiative है this one. New collective quantified goals on climate finance, so these are the new goal now set instead of $100 billion per year transfer of fund, right? So that may be ranging from 100 billion to 1 trillion, $2 trillion as in to finance the climate. So these are the various themes I believe important from the perspective of the 2025 examination. So you guys shall go through
दिस थीम्स ऑन रिपीटेटिव बेसिस। तो ये टॉपिक बहुत डायनामिक होता है, बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दिस। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ you can connect it with, you will find 3 to 4 or 5 questions are now UPSC has started to ask from this theme, and this theme is species distribution, their behavior. See, till again you will find 2020, 21, the question on species were mainly around the distribution of the species, where this species is either located, in which part it is endemic to South India, North India, South Asia, West Asia, or in that particular case. What happened, however, since 2021 and afterwards, you will find the अब UPSC ने species पे question का pattern change कर दिया. That pattern is now on the behavioral pattern of the species. Okay, behavior pattern in the sense what? The food habit of the orangutan, the squirrel, where does it store its food, right? Or you will find cheetah, yeah, leopard, in the comparison, how they mark their territory by means of urination or that particular way. So you will find question on these species. Now they have changed their track. And this track is particularly on the behavioral aspect of this, ठीक है, even though known या elephant के behavior पे question है ना, तो this thing you will find is rather now pretty much common over in the examination. Which of the following are nocturnal? तो see, you will find कि ये सारे questions है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, and rarely I find कि question किसी species पे repeat हुआ है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ स्पीशीज है हमारे इन एंड अराउंड इंडिया, बीइंग ए वेरी बायोडिवर्स कंट्री, यू विल फाइंड क्वेश्चन रिपीट होना वैसे भी चांस नहीं बनता। सो यू नीड टू बी फॉर दैट मैटर वेरी ऑब्जर्वेंट एंड वेरी अलर्ट एज वेल, ठीक है। सो स्पीशीज लाइक दोज आर इन द करंट अफेयर्स एंड पॉसिबली और भी डोमेन से आ सकता है। बोनोबो, Africa, you will find twice question somehow connect with the bonobo, ठीक है। marsupial या kangaroos, right? So there as well you will find the Eurasian otter, it was in the news. This one Himalayan wolf है, leopard है, या recently dolphin census has been conducted. Lion is anyway in the news, tiger is anyway in the news, leopard is anyway in the news due to man animal conflict, है ना। So you will find this species in and around in the current affairs, and you have to prepare at least those species, at least those. See, there are no limit to this particular topic, but फिर भी the thing is कि at least जो known areas में species है, we will rather prepare them well. Snow leopard है ना, elephant है, so these themes. Then again from the environmental domain, one of the most repetitive theme. Same, see what I have seen, I have observed. Environment में UPSC बहुत dynamic होती है, right? In geography, however, it is not very dynamic. But when it comes to environment, UPSC, has very dynamic nature. Since 18, 19, 20, you will find कुछ एक pattern पहले चल रहा था, अब उसके बाद कुछ नया pattern start हुआ है, ठीक है। ये नया pattern of जैसे for example, you can connect with the protected areas as well. पहले protected areas या network पे जो question पूछा करते थे, like those in and around national park, wildlife sanctuaries या biosphere reserves, ठीक है। So those questions, their location based questions were pretty much common. Okay, location based कि what type of climate may be or where they are located, national park and state, those are connected with, और पखुई wildlife sanctuary is located in which of the following state, right? ऐसे कुछ questions थे जो 2020 तक possibility या और भी एक और कुछ साल you will find UPSC used to ask. What happened, however, now with the present trend, now the nature of question has grown different, ठीक है। and different in a sense, you will find अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन भी प्रोटेक्टेड एरियाज पे आएंगे, बट अब क्वेश्चंस आएंगे कम्युनिटी या प्रोटेक्टेड एरियाज के नेचर पर, या लॉज रिलेटेड या रेगुलेशन रिलेटेड, या इन सम टिपिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। सो द थिंग इज वी हैव टू, जैसे दिस वन कम्युनिटी रिजर्व वाला क्वेश्चन है ना, यू कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट दिस कि ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे या किसी इसी रिलेटेड स्कीम पे हो सकते हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस प्रोटेक्टेड एरिया एज अ थीम, एज अ विराट थीम, इन दैट पर्टिकुलर वे। सो अब एक ही डिमेंशन को लेकर चलेंगे तो that is not going to work, right? Considering the very dynamism of this examination, we have to prepare holistically this particular topic, ठीक है। तो current affairs में you will find there are many protected areas in the news, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व, it was in the news because declared as international dark sky reserve, या हेनले over in the Ladakh है, या you will find new Ramsar sites are always being declared, तो वो एक है। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन over in the अष्टामुड़ी लेक है in Kerala,
that one equally. Gandhi Sagar is now identified the second home for the cheetah, so this one equally. Chhattisgarh has the India's third largest tiger reserve, Guru Ghasidas Tamor Pingla tiger reserve, okay? And the first two are like Nagarjun Sagar Sri Salem and Manas reserve, okay, in Arunachal. Then the scheme that got an extension over in the 15th financial commission cycle, integrated development of wildlife habitat. Okay, so these are what the various themes you will find are important from examination perspective from this particular topic. Yeah, so आपको इस टॉपिक पे एक रिक्वायर्ड डेप्थ अचीव करनी पड़ेगी, ठीक है, और जिस हिसाब से टॉपिक का पैटर्न चेंज हो रहा है इक्वली यू नीड टू प्रिपेयर, है ना, एंड लाइक prepare this particular end as well accordingly. Then again, the most common kind of topic, the theme that repeats, pollution and pollutants as well, ठीक है. So pollution and pollutant you will find के current affairs पे वैसे भी होता है, तो see number of questions you will find mercury pollution पे भी question है of no reason, ठीक है. Then you will find के environmental causes of acid rain or which of the following activity release most methane and nitrous oxide, या बहुत सारे questions you will find now, so connect with. Okay, so pollution पे question होगा, that is a pretty much repetitive and common theme. Now, see in the current affairs equally, now what type of topic then or areas you need to prepare? See, global methane tracker 2024. Yeah, you can global or the nitrous oxide release from the world, that is report equally given. And do remember, India is now the second largest nitrous oxide release released country over in the world as well, तो वो भी current affairs में होगा. Then equally from the pollution you will find water pollution, वो वैसे भी current affairs में, Yamuna water pollution are connected with air pollution, तो that is a very universal क्या ऑल टाइम प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली इटसेल्फ या इंडिया इटसेल्फ, तो वो वाला करंट अफेयर्स में होगा. देन यू विल फाइंड ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट्स ऑन नाइट्रस ऑक्साइड. हाँ, यस, वाटर फ्लोराइड कंसंट्रेशन. सी ओवर इन द ग्राउंड वाटर ओवर इन द इंडिया द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड दैट कि फ्लोराइड कंसंट्रेशन इज द हाईएस्ट ड्यूरिंग समर टाइम एंड ओवर इन द राजस्थान स्टेट. अपार्ट फ्रॉम द फ्लोराइड you will find nitrite are equally pollutant over in the water, arsenic, uranium, beryllium, again. Okay, so these are what are pretty much common pollutants over in the India's groundwater, right? तो यहाँ पे फिर corrective measures क्या होंगे और इसके impacts क्या हो रहे हैं over on the society. You have to look for PYQs already पूछ रखा है over on this contamination. Then you will find black carbon emissions or related facts है जो pollutant से connect करेंगे. Which of the following are released by the crop residue burning? Which of the following are released from the volcanic eruption? Which of the following are due to the lead to the benzene pollution, है ना. तो इतने क्वेश्चंस यू विल फाइंड ऑलरेडी पूछ रखे ओवर इन द एग्जामिनेशन अराउंड दिस टॉपिक ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट. यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक इन प्रीटी मच डेप्थ. सी डायनामिक है और कौन से टॉपिक पे आ सकता है, जैसे मर्क्यूरी पोल्यूशन, ठीक है, तो ये कि मतलब नॉट हैविंग एनी वेरी स्पेसिफिक रीजन कि मर्क्यूरी पोल्यूशन पे क्यों क्वेश्चन आया, ठीक है, या बेंजीन पोल्यूशन पे, हाँ, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग फाइन विद के दिल्ली पोल्यूशन है, बट वाटर पोल्यूशन पे तो दैट इज फाइन विद. बट अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जहां पे नहीं हो, तो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक इन कंपैरेटिव डेप्थ इन इटसेल्फ. Okay, so that is equally a repetitive theme. You have to prepare this thing equally in advance. Then the next is C terminologies. Now see, that is what my observation about this C terminologies over in the examination. See, C terminologies, what does it mean by? It means carbon related terminologies. See guys, simply what I did, I simply over in the examination paper मैंने control find किया carbon, and you know what I observed कि carbon related number of questions are what being framed over in the examination. 4, 5, 6 number हर किसी पेपर में ये वेरी कर रहा था. So simply what it reflect कि कार्बन रिलेटेड ये जो फिनोमेना है ना, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन फर्टिलाइजेशन, या यू विल फाइंड और कौन सा डीकार्बनाइजेशन, यू विल फाइंड इतने सारे रिलेटेड क्वेश्चंस. एंड एवरी ईयर ओवर इन द एग्जामिनेशन दिस सी टर्मिनोलॉजी इज रादर ए कॉमन रिपीटेड थीम ओवर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज आवर विराट थीम.
ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे यू विल फाइंड कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है ना, या कार्बन मार्केट इक्वली, कार्बन मार्केट आल्सो, राइट, डिकार्बनाइजेशन। सो इतने नंबर ऑफ थीम्स है दैट यू हैव टू, सो यू नीड टू प्रिपेयर लाइक दिस काइंड ऑफ थीम, कार्बन फार्मिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो कार्बन रिलेटेड वेरियस प्रोसेसेस है, कार्बन रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स है, कार्बन कैप्चर, carbon trap, right? So you have to explore these various themes and then various topics as well, जिससे अगर एग्जामिनेशन में आएगा you will social cost of carbon, है ना, that was question asked as well, social cost of carbon. See, तो इतने सारे क्वेश्चंस रहेंगे ना in and around, means 2 to 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है in connection with the carbon itself, ठीक है। तो this C terminology वाला section you have to prepare well also. Then environmental legislation, rather much important, environmental legislation पे क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में 100% पूछे। तो लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सी करंट अफेयर्स में यू विल फाइंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट इज इक्वली देयर 1972, सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन एक्ट है, जिसमें फिर से अमेंडमेंट हुई है, तो न्यू वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट एंड रूल्स है वो भी बना है। वाटर सेस एक्ट है 1977। देन यू विल फाइंड एयर एक्ट है 1981, Environment Protection Act 1986, then you will find the Biological Diversity Act 2002, SC/ST Right Act, Forest Dwellers Right Act 2006 itself, and few further topics or few further legislation connected with it, ठीक है। So current affairs में तो particularly 2 acts है जो in the news है because of their amendment. Again you may find other acts in the current affairs, so you have to go through this act, you have to prepare them well, so that if question that will be asked, right, you should have enough content connected with, and you will rather well prepared for this kind of theme. See guys, this is what our genuine attempt, genuine initiative to help you to, you know, like to help you to prepare your strategy accordingly. See, ऐसे होगा ना कि हम अगर randomly पूरा as it is cover कर लेंगे, keeping every particular topic or every particular area a very equal importance or time duration if you are going to have, that is not going to work for this kind of examination. See, you have to have some, you know, right strategy जिसमें हम ना topics हमारे पास हर किसी का significance पता है हमको, simply, right, वो branch हो सकती है, वो topic हो सकता है, वो question हो सकता है, वो कोई area हो सकता है, and any other aspect as in. So we have to, you know, have a clear strategy for to prepare for that particular subject, topic, and all this kind of information. And this particular initiative is again to help you guys for this preparation of your preliminary examination. I believe even though what I have listed this topic mainly for 2025 preliminary examination, but you can stretch it even further. ओके क्योंकि ये जो थीम्स है, ये जो टॉपिक्स है, ये मतलब ये रिपीट होंगे ही, है ना, ऐसे नहीं होगा कि ये रिपीट नहीं होंगे। सो यू हैव टू एंश्योर दिस कि ये जो टॉपिक कर रहे हैं हम प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, मेंस के लिए वैसे कुछ इसमें चेंजेस होंगे फॉर श्योर, बट दे आर रादर, you know, relevant for even for further upcoming examinations as well. So yes, this is all about for this particular explanation of this VIRAT topics. Those are like simply repetitive asked questions and themes over in the examination. I hope you must have enjoyed this video, है ना? If you really like it, so share it with your friends, near and dear ones as well, and do subscribe to our channel. Thank you.